Hello and welcome everyone to yet another YouTube video from Board Infinity. Today we are going to discuss success story of Gaurav. So Gaurav, first of all, congratulations on your placement. Thank you. Yeah, all right. So today we'll be getting to know about Gaurav's academic background, his learning journey, and about his interview experiences and how he cracked them. So Gaurav, why don't you start with your academic background, schooling in college, wo sab kaisa raha? Yeah, sure. So first of all, I will introduce myself. My name is Gaurav Topre, and I belong to Akola, which is district in Maharashtra. I completed my schooling from Akola only. Right. Till 12th, I was in Akola. After 12th, I completed my B.Tech from Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, located in Raigad district. So my trade, or we can say the branch in B.Tech, was electronics and telecommunications. So basically, I don't belong to so-called tech background and coding background. So what happened when I was in first year and second year? Just I completed second year, and there was a thing which impacted all of us called as lockdown. So lockdown was there, and I was at my home. So classes were going online, and I was not having that much pressure from my university to complete the academics, and I was not that much involved with the academics. So I started exploring new things, and it was clear कि लॉकडाउन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट तो घर पे जोड़ नहीं सकते. So there was some alternative we have to choose for, where to go for. So first of all, I touch web development, like जो नहीं मतलब out of range लगा थोड़ा. So then the next thing was the craze of IT industry, data science. So I choose for data science. Firstly, I choose for Python, then make step by step. But the thing was, I was not getting that much flow with the domain. Right. I was learning Python, but how to apply in data science, I was not knowing. I was not knowing the difference between Excel and CSV at that time. So all the things have taken me to the data science thing, and now I'm working as a data analyst. Perfect. Right. So you were exploring on your own, right? That मतलब आपका data science में interest वहाँ से spark हुआ, right? Yes. So now when you were looking for courses online, what were the things you were looking for, and what made you choose Board Infinity? First of all, as an Indian, I will absolutely go for something which is free of cost. So first alternative was YouTube. Right. So I visited many YouTube channels, and while visiting those YouTube channels, I came across two, which are not YouTubers. They are EdTech platform. First is Board Infinity, and second was Upgrade. So I came across those. So I found Board Infinity to be user friendly, or we can say a student friendly, because you people record the Zoom meeting and upload as it is. Like whatever if the mentor is talking somewhere else, that also get uploaded. Right. So that is what we get the space of the teaching. Like if he is teaching naturally as it is uploaded on YouTube. At other platform they cut. So I thought कि अगर इनका YouTube ऐसा है तो साला live कैसे रहता होगा. So this is the thing. Then I search on LinkedIn that how is there any connection of me who had already taken. So hopefully I found my uncle. My uncle had completed data science course from Board Infinity. The name is Shashank Mahajan, and he had completed. So I contacted him, and he told me like he was working as a software engineer. He wanted to switch into data science, so he's taken the course while working. And Saturday Sunday wala plan was working good, and kar liya. So then I came across one of your program manager who had contacted me, who had explained me everything. And fees थोड़ी मुझे लगी कि इतना fees भरना worthful रहेगा नहीं. I was questioned about it. Then I came across the second amazing thing, which called a scholarship test. So ये तो पहली बार पता चला. तो YouTube से थोड़ा बहुत सीख लिया था. On the basis of that, I'm saying like बहुत लोगों का intuition होता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट बनती ही इतनी हार्ड है कि आप उसको क्रैक ना कर सके. सो आई एम हियर टू क्लियर दैट. बोर्ड इन्फिनिटी की जो स्कॉलरशिप टेस्ट थी वो ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब वाला नॉलेज जो भी सस्ता मिलता है उसके बेसिस पे मैंने क्रैक की थी, और आई गॉट 30% ऑफ स्कॉलरशिप इन फर्स्ट गो. लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड द टेस्ट एंड आई गॉट 30% ऑफ स्कॉलरशिप. एंड 30% आने के बाद एक और था कि इतनी बड़ी अमाउंट वन टाइम कैसे दे. Honestly speaking, I have my mother as single parent, so I was not ready to pay at a single time. Then one of your another program manager told me about the EMI scheme. There is EMI. Then फिर से एक question आया. I'm sorry, I'm exploring question. नहीं, that is great. So
क्वेश्चन आया कि हाँ भाई ईएमआई तो लगाएंगे फिर इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाएगा, देन यू आर हैविंग क्रेडिट फेयर व्हिच इज योर पेमेंट पार्टनर व्हिच इज गिविंग like Interest free. loans on the interest free loans, so we have to pay that amount only in specific time. So that was a great thing for me, and I opted for it. At that time I was also working, like I was studying also and I was working as a tutor. I was teaching 11 12 standard students as a part time, so I managed to pay all the fees and all. And talking about the experience of learning in initial phase, so as you told me, like my decision was not sure. I paid only 4,000 rupees, and you people started my, like Board Infinity started my initial phase, which they called, I don't remember. Foundation we call it. Yeah, foundation course, where the mentor was coming one by one, and they were having half-hour session, 1 hour session. There was a mentor named Siraj Ahmed, if I'm not wrong. So at first go, he cleared all my doubt that I have choose the right place. Like he explained me everything. He had given his example. He's working in math company, so he had told me everything. Like, yes, Sarata, and he was not talking like a mentor. Actually, he was like talking like a bade bhaiya. So must. In fact, I would like to add that Siraj is also our learner only. He got he started working as a teacher. He told me that only. If you performing well, if you got job well, then you have side hustle. Like you can be also mentor. Right. So yes, it was a great, like फाउंडेशन में मेरा बहुत कुछ क्लियर हो गया था. तो फाउंडेशन में आप लोगों ने लाइक वो रहता है ना, मूवी रिलीज करने के बाद उसका ट्रेलर डालते. सो आई गॉट अ ट्रेलर ऑफ माय लर्निंग पार्ट. This should be. All right. So ठीक है फिर. So now your foundation was completed and your actual classes were started, right? So of all the modules you studied, right? किसमें मजा आया, किसमें struggle हुआ? What projects did you made? As I already said, I am not from IT background, so मुझे पहले से एक्सपोजर नहीं था किसी चीज का. SQL का, Python का थोड़ा बहुत था, लेकिन बाकी चीजों का एक्सपोजर नहीं था. एंड आवर फर्स्ट मॉड्यूल वाज एक्सेल. तो पहले तो क्लिक हुआ कि यार गलत तो नहीं कर दिया, डेटा साइंस में आके ये कंप्यूटर MSc IT वाला पढ़ा रहे, ऐसा लगा पहले 2 दिन में. लाइक प्रियल मैम वाज देयर, एंड थोड़ा थोड़ा करके लगा था कि एक्सेल ये चौकोन डब्बों के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, या बियॉन्ड भी बहुत कुछ है. और 2-3 क्लास में क्लियर हो गया कि एक्सेल इज गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप द एक्सेल इफ यू वांट टू डेटा एनालिसिस, इफ यू वांट टू परस्यू करियर इन डेटा एनालिसिस. सो एक्सेल तो बहुत सही गया. देन आफ्टर एक्सेल वी गॉट टू अ टैब्लू, स्टोरी टेलिंग वगैरह. लेकिन उसके बीच में लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सेल टू टैब्लू, वी गॉट वन अमेजिंग थिंग दैट वाज प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट. सो हमें लाइक ये स्पून फीडिंग नहीं हुई थी जैसी आजकल मैं लिंक्डइन पे बहुत देखता हूँ. एक टास्क लिस्ट दी जाती है और टास्क लिस्ट कंप्लीट करो और खुश रहो. दैट वाज नॉट द थिंग. हमको बोला गया था कि यू हैव टू सर्च फॉर डेटा सेट ऑन योर ओन, यू हैव टू चूज प्रॉब्लम ऑन योर ओन, यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट अ डैशबोर्ड. इससे क्या होता है, ये इसको नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है कि ये सब हमें करने के लिए बोल रहे हैं, बट दैट इज फॉर आवर बेनिफिट, because we are getting to know that from where to pick data set, which data set to pick, how to frame a problem, and how to answer that problem. Why clear होना चाहिए. Yeah. Now as I'm working as a data analyst, now I'm getting that कि हाँ इसलिए तो हमें सिर्फ डेटा दिया जाता है, कोई कंपनी एक्सप्लेन नहीं करती बैठे डेटा. So उससे जो डैशबोर्ड बनाया उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया. एक्सेल के डैशबोर्ड से आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ एंड आई कैन आंसर. और उसके बाद फिर डैशबोर्ड तो बना ही लिया था एक्सेल के वक्त. तो उसको लाइक मॉड्यूल ऐसे अरेंज है कि आपका मोटिवेशन बिल्डअप होता जाता है. एक्सेल में थोड़ा सा लाइक ऑर्थोडॉक्स डैशबोर्ड बना था, उसको टैबलो में एक एडवांस बना दिया. सो दैट बूस्टेड अप. और फिर जो ग्रेडिंग स्टाइल है, दैट आई लाइक द मोस्ट, लाइक दैट थिंग आई लाइक द मोस्ट, कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, आप अपना मॉड्यूल सबमिट करो. देन एक कैलेंडर आता है जिसमें आपको आपकी डेट शेड्यूल. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल कि 9:30 बजे का भी स्लॉट मिलता है आपको, रात के 9:30 बजे का भी यू आर गेटिंग स्लॉट फॉर इवैल्यूएशन. देन द इवैल्यूएटर कम्स एंड इवैल्यूएट्स योर प्रोजेक्ट एंड ही मेक श्योर कि आपका सारा का सारा सही है. लाइक आई एंड माय फ्रेंड वी बोथ एनरोल्ड इन बोर्ड इन्फिनिटी. हमेशा ऐसा होता था कि मुझे अगर इतने मार्क मिलते थे, आई यूज्ड टू कंपेयर विद हिम कि आप तेरे को कितना मिला. हमेशा 2-3 मार्क का तो डिफरेंस रहता था. देन वी गोट कि हाँ सच में किया है, ऐसा नहीं है कि आया 90 दिए चला. तो वो सही था. उसके बाद एसक्यूएल हुआ. एसक्यूएल में आई गॉट रियली स्टक क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था. लेकिन फिर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डाउट क्लियरिंग सेशन. सो आपको नहीं समझा है लाइव क्लास में तो वहां पे पूछ लो,
वो टाइम देते थे. अगर नहीं भी क्लियर होता, सैटरडे संडे क्लास रहता था, तो इन बिटवीन वीक वी हैव टू कांटेक्ट प्रोग्राम मैनेजर, एंड प्रोग्राम मैनेजर यूज्ड टू बुक डाउट क्लास. एंड डाउट क्लास में फिर मैं सारा मेरा भड़ास निकाल लेता था, जितना भी नहीं आया तो वो मेरे 2 घंटा 1.5 घंटा. एंड दैट इज द मेन थिंग कि डाउट क्लास का सेशन ये नहीं है कि आपको 1 घंटे में पूरा कुछ पूछ लेना, नहीं, कितने भी देर बैठो. उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग आया. देन देयर वाज अ अमेजिंग थिंग व्हिच इज मशीन लर्निंग. लाइक मशीन लर्निंग का मैं आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज बताता हूँ बोर्ड इन्फिनिटी का और बाकी लोगों का या फिर यूट्यूबर्स का. दैट इज थिंक, यूट्यूबर क्या कहते हैं, इम्पोर्ट साइकिट फ्रॉम साइकिट इम्पोर्ट. बहुत लाइक उंगली पे गिन सकते इतने यूट्यूबर है कि जो एक्चुअल मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं. बोर्ड इन्फिनिटी ने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन चेंज कर दी. मशीन लर्निंग इज नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, इट इज अबाउट मैथ्स. If I'm not wrong, I'm not remembering the name. Sumit sir was there. Sumit Saurabh. Yeah, Sumit Saurabh. He changed the definition of machine learning. Before machine learning, he have taken stats, and after stats, he directly jumped to algorithms. And in algorithms, he haven't told us like ये import करो, वो import करो, वो import. No, he started with कि ये maths है भाई, तुम बिना इसके भी कर सकते हो, बिना मॉड्यूल के भी कर सकते हो. और सुमित सर, when Sumit sir stepped in for stats and machine learning, it was got clear कि भाई पहले मैथ्स क्लियर करो, बाद में सब कुछ होगा. एंड उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ मैथ्स क्लियर करना है, तुम्हारा करो. नहीं, he was there with us and he cleared everything. That was my way from Excel to machine learning. And now on the basis of that maths only, I am handling all the individual machine learning project at my current organization because of that strong basic. Amazing. Two things I really like this कि यार एक तो तुमने डाउट सेशन का फुल एडवांटेज लिया, राइट? बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि लर्नर वो लाइव क्लास के भरोसे हैं कि यार क्लास में हम देखेंगे, होगा नहीं होगा, वीकडे फिर पूरा एम्प्टी है, अगले हफ्ते तक यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट कि यार क्या पढ़ा था. सो दैट इज डेफिनेटली वन ग्रेट टेक अवे फॉर लर्नर्स हु आर वाचिंग कि यार डू टेक एडवांटेज ऑफ योर weekdays as well. Secondly, you said कि यार मेरे फ्रेंड के साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन था, राइट? You used to compare. That motivation is also necessary in that. Amazing. So one thing I wanted to ask, you said कि यार तुम्हारा कॉलेज चल रहा था, you were working part time as well, tutoring students and all, then साथ में board infinity चल रहा था. So like how were you juggling time? वो कैसे manage हो रहा था? Yeah, so that was the great thing you asked. Like मेरा ट्यूशन का टाइमिंग तो मैं चेंज नहीं कर सकता था because I am working for them. They were not working for me. But here I can request for time schedule. Like Saturday Sunday तो वहाँ पे भी छुट्टी रहती थी, तो this I can manage. लेकिन क्या होता था, डाउट सेशन के वक्त मेंटर्स अवेलेबल नहीं रहते थे. So I still remember, I'm not recalling the name of that mentor, but he managed to get up at 7 and he started a doubt session with me at 7:15 a.m. in AM. Like he was a working profession. Still he managed at 7:15. It was not a doubt session, it was mock interview during my placement preparation. Okay. So 7 बजे मुझे उठा के इंटरव्यू लिया, and first thing is he asked me कि नींद हुई है ना आपकी, like नींद हुई होगी तो ही like we can continue, then नहीं तो मुझे आप. And his designation was he was senior manager at some organization. Okay. Working for Board Infinity. So ये टाइप का डेडिकेशन अगर वो लोग दिखा सकते हैं पढ़ाने में, so पढ़ने में हम तो थोड़ा एडजस्ट कर ही सकते हैं. Right. That's my right. तो फिर अब जब ये करिकुलम आपका कंप्लीट हो गया, then how was your placement preparation going on? So first thing is that कि जैसा मशीन लर्निंग होता है, so I got like वो बोलते हैं ना, थोड़ा मन में लड्डू फूट रहे थे कि कब प्लेसमेंट आएगी और कब प्लेस हो जाऊंगा मैं. Because I choose Board Infinity's course in that way कि जब Board Infinity का कोर्स खत्म होगा, मेरा ग्रेजुएशन भी खत्म हो रहा है, तो मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट वगैरह का रखा था, और आई एम हैविंग समथिंग इन माय हैंड एंड आई एम साइड हसलिंग. सो जब प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू हुआ, फर्स्ट थिंग इज दैट कि बहुत लोगों का कहना था कि जब हमारी बैच आई तो बोर्ड इन्फिनिटी ने सिस्टम बदल दिया. सो इट इज नॉट अ सिस्टम चेंज, इट वाज अ थिंग व्हिच आई कैन से अ बेस्ट थिंग आई केम अक्रॉस एवर. कि अब तक क्या होता था कि आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी चल रहा है 1-to-1 का एक डिसएडवांटेज मुझे तभी भी लगा था और अभी भी लगता है कि अगर आपको कुछ मिस हो गया ना, दैट मेंटर हैव टू रिपीट दैट थिंग वंस अगेन. और एक का अगर मिस हुआ तो सारों का टाइम वेस्ट जाता है. वी हैव डाउट सेशन फॉर यू. सो दिस टाइम जब मेरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन का टाइम है, तब बोर्ड इन्फिनिटी हैव चेंज्ड द सिस्टम टू लाइक रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दिए थे मॉड्यूल वाइज. एक घंटे के वीडियोस नहीं थे, लाइक आई कैन से 1.5 मिनट का भी वीडियो था और आधे घंटे का भी वीडियो था. डेटा इंजीनियरिंग कवर्ड था, एसक्यूएल कवर्ड था, पाइथन कवर्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मशीन लर्निंग भी कवर्ड था. तो
नॉलेज सेक्शन कुछ भी है वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि जब भी मुझे कुछ डाउट आता था आई वाज गोइंग देयर. और 2 घंटे का क्या होता है पता है क्या, जब आपने इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट कर लिया वही चीज आपकी प्लेसमेंट में रिपीट होने वाली है. फिर से 2 घंटा बैठना इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम. इन दैट थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. जहाँ पे स्टक होते हो वो वीडियो देखो वापस आओ. और दैट यू आर हैविंग दैट एडवांटेज. सेकंड थिंग इज दैट 2 घंटे का वीडियो भी डाउनलोड करके अब रिकॉर्ड करके आप लोग डालते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, then else I have to scroll through the 2 hours to get a single point. So that was, that was the very reason behind building knowledge base ke while a person is revising या उनको कोई specific भी topic देखना है, they can reach directly out there. They need not to scroll entire time. मतलब that is also available in the recording, but the big thing is also there. And that thing I'm still using. Like today only in morning I came across an SQL query where I had to create a database. Then I have to enter the database, like enter the entries, and at some point on the basis of some condition I have to update that thing. So मुझे update की query ध्यान मतलब समझ में नहीं आ रही थी. I can use Stack Overflow, कुछ भी यूज कर सकता था, लेकिन वो तो टेम्पररी हो जाएगा, तभी एरर सॉल्व हो जाएगी. देन लाइक मोबाइल में ऐप था बोर्ड इन्फिनिटी का, लॉग इन किया, ईयरफोन डाला, जल्दी से अपडेट वगैरह का पार्ट देख लिया एंड आई वाज क्लियर. लाइक जब मेरा मैनेजर अगर मुझे पूछते कि हाँ ये किया तूने ठीक है, कैसे किया, आई एम हैविंग अ बैकअप, 5 मिनट का बैकअप मेरे पास है. If I'm returning to my home now, I can watch again and I can clear the concept so that next time I don't have to Google the thing. That's the best thing. Amazing. बढ़िया. So that was it, आपका placement preparation. Now, talking about actual interviews, you applied to multiple companies off campus as well, right? Yes. So उनमें कैसा आपका experience रहा? For what role you appeared and कितने उनमें yeah. So firstly, I have applied for persistent system. Okay. So persistent system on campus आया था और it was in start of my 4th year before applying for board infinity. और board infinity का मेरा तब तक कोई contact नहीं था. So at that interview was like a get setback for me. कि वहाँ पे मैं बुरी तरीके से फेल हुआ. I will not ashamed of telling that कि मैंने technical round निकाल लिया. Technical interview जो था वहाँ पे मुझे लगा कि we are lacking somewhere. Okay. So at that moment I decided कि now just get over everything and just set your basic to be strong. तो फिर मैंने बेसिक वगैरह डेवलप करना स्टार्ट किया. फिर बोर्ड इन्फिनिटी में एनरोल करके बोर्ड इन्फिनिटी का कोर्स खत्म होते होते आई गॉट अनदर ऑन कैंपस चांस व्हिच वाज साइटिव सॉल्यूशन बेस्ड आउट ऑफ वाशी इन मुंबई स्टार्टअप ऑन कैंपस था. So that interview I cracked on, and I'm honestly speaking that they ask on the probability. They have the base strong of SQL and probability. They asked me. I cracked both the round and I was placed at site solution. But I was looking for some other thing. I haven't wasted their, what we can say, the जगह उनकी waste नहीं दी मैंने. I haven't confirmed my offer. I haven't joined their internship. I haven't done anything. I was looking for better opportunity. So finally I came across like as a project engineer in Wipro. It was mass hiring. Wipro hires mass, like 2000 बंदे उठा लेते हैं उसमें. लेकिन उसमें भी फील नहीं आ रहा था कि like 2000 में एक है तो 2000 में एक है. And the role was like project engineer. It was not based of data science. And my passion became data science now. From an electronics engineer, now I have become a passionate data analyst. So I came across the amazing startup, a global AI leader, Findability Sciences, based out of Boston, and they are having branches in India also. One is in Mumbai and second is in Aurangabad. Right. So I came across this. So I applied for as a data analyst, and they have taken my 2 tests. First was Python test, which was purely based on pandas and NumPy. Okay. Before that, this was second one. Before that, one of their employee had just taken my verbal interview. Like he called me and he asked me some random question कि lambda function dot apply, and it was so quick कि वो कॉल में ही पता चलता है कि बंदा टेस्ट देने के लायक है या नहीं. If I'm able, so उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बिठाया. And after test, it took some days to evaluate the test. Like 40 लोगों ने टेस्ट दिया था. Out of 40, like 10 or 12 got selected. If I'm not wrong, 10 or 12 got selected. And after that, their managers, like जिनके भी टीम में आप काम करने वाले हो, अगर आप select होते हो, so they have taken my interview. And that was a setback for me. That was a get back for me. Persistent was setback. This was a get back. The manager or interviewer
उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपको मशीन लर्निंग का क्या आता है. She had gone through my resume and she knows कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, not from IT background. So she asked me single question कि आपको मशीन लर्निंग का क्या आता है. She was having a chance to kick me off कि हाँ इतना इतना आता है और अटक गया तो हो गया, निपट गया. So I used all the techniques told by Sumit sir, all the techniques. Like he used to tell me कि like Sumit sir का एक डायलॉग था, if I'm not wrong, कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे वैसा होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है. वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ के सारे एक्सपीरियंस उन्होंने while teaching us told कि ये प्रॉब्लम था मेरे यहाँ पे, फिर मैंने उसका ऐसा सॉल्व किया, ऐसा सॉल्व किया. So I just remembered that and used that कि खुद ही प्रॉब्लम बनाया इंटरव्यू में, मैंने खुद ही उसका सोल्यूशन दिया. और लाइक इंटरव्यूअर वाज इंटरप्टिंग मी एंड आस्किंग मी हाँ ठीक है ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे. राइट. द बेस्ट थिंग शी लाइक्ड इन मी कि व्हाटएवर प्रोजेक्ट आई बिल्ट, मिनिमम प्रोजेक्ट वर लाइक कि हाँ कि ये प्रोजेक्ट किसी ने किया है, ऑलरेडी किसी ने किया है. वो बोलते हैं ना टाइटैनिक डेटा सेट तो ऐसे कि क्रश करके छोड़ देना चाहिए. वो तो मेरे रिज्यूमे में नहीं था. एंड दिस वाज द वन ऑफ द टिप व्हिच यू लाइक mentors from board interview told me while placement preparation कि आपका रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि रेज्यूमे देखने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले के देखा है. तो और एक टेक्निक मुझे बताई गई थी, दैट इज फेक क्लाइंट क्रिएशन. फेक क्लाइंट क्रिएशन क्या रहता है कि यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट बट यू क्रिएट इट फॉर अ क्लाइंट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. तो मेरे हर प्रोजेक्ट में आई राइट एबीसी फॉर एबीसी कंपनी, फॉर XYZ बैंक, फॉर KLM, ऐसा मैं कुछ भी लिखता था. उससे एक मैं स्टोरी डेवलप करता था और उस स्टोरी को प्रोजेक्ट के हिसाब से सॉल्व करता था. मेरे दो प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के ऐसे थे कि देयर वाज HR एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग का नहीं एक्चुअली, डैशबोर्डिंग का, BI डैशबोर्ड बनाया था मैंने और उस डैशबोर्ड को करेक्ट भी करवाया था. तो करेक्ट करवाया, कैसे करेक्ट करवाया, डैशबोर्ड देख लिया, उसको बाजू में छोड़ दिया, 10 दिन के बाद फिर से देखा, हाँ लगा ये फॉल्ट है. क्योंकि कैसा है आपका प्रोजेक्ट बनाते हो और तुरंत देखते हो तो फिर यू आर नॉट गेटिंग फॉल्ट. 10 दिन बाद देखते हो अरे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ. सो दिस वाज अ टेक्निक. और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस मैंने इंटरव्यू में बताया. सो दिस गॉट मी अवे. लाइक उन्होंने लाइक दे हैवंट आस्क एनीथिंग कि ये कैसा ये कैसा. Yes, some questions she asked me on probability. That is the basic probability stats उन्होंने पूछा. और probability stats में उनका मेन फोकस था कि आपका क्लियर है क्या, लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है. प्रोबेबिलिटी में आके सॉरी स्टैट्स में आके डिफरेंशियल इंफरेंशियल स्टैट्स क्या है. डिफरेंशियल इंफरेंशियल में डिफरेंस बताइए, और सैम्पलिंग क्या रहती है, पॉपुलेशन सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन सैंपल, और इंफरेंशियल स्टैट का लाइव एग्जांपल. एंड दिस ऑल वर टोल्ड टू अस. लाइक वो तो यहाँ पे था कि निकल जाता था फटाक से. सो जो चीजें हुई वही पूछी गई एंड दैट्स व्हाई I got all the answer correct in my interview. Yes, I will not be ashamed of telling I got one answer wrong, but that also I get to know after like, completing my interview. जब मैंने देखा कि हाँ ये पार्ट की तरफ छोड़ दिया था तूने. It was not like it was not covered. तो गलत हुआ वो भी covered हुआ था. That was my fault. ANOVA test it was. So ANOVA test में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और ANOVA test का एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया. That was my interview experience. It was quite long. Quite a lot of smart work I see in that. जैसे अपना तुमने सिनेरियो वाला बताया, या looking back at your own project after 10 days, yes, telling to your recruiter, you know, in storytelling. So amazing. मतलब being mindful of, you know, what you're going to say in interview, 80% of the job is done there. Yeah. Perfect. So yeah, any advices, you know, for people who are right now learning their course, right now they're going to appear for their interviews, any advices for them? First and only advice is patience. Like you need to have patience. If you are saying कि मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और हाँ मुझे जॉब नहीं लगी, सेकंड इंटरव्यू जॉब नहीं लगी, हाँ तो डेटा साइंस मतलब हुआ नहीं है. तो इफ यू आर गोइंग इनटू डेटा साइंस, सी डेटा साइंस इज न्यू. ये इसको 50 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, ये डेटा साइंस इज न्यू एंड एवरी कंपनी इन्वेस्ट इन अ एम्प्लॉय. कुछ पैसा वो देती है. सो व्हाट दे वांट आउटपुट. And why many companies are afraid of hiring freshers, because they know कि इनसे होगा या नहीं होगा. So they are looking for capabilities. Second thing is current scenario, recession is going on. So recession is the most important factor which is affecting everything. So the hiring. So आपको अगर आता है, so you
अगर 5 बंदे बैठ रहे हैं ना, 5 बंदे अगर शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, सो योर एम शुड बी यू शुड बी बेस्ट ऑफ देम। राइट। और कभी कभी बेस्ट ऑफ देम होके भी काम नहीं चलता, बेस्ट ऑफ देम ने यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ ऑल। जितने भी बंदे कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं उससे बेस्ट ऑफ। तो ये बेस्ट बेस्ट का खेल तो कभी खत्म नहीं होने वाला। सो वन थिंग यू हैव टू, जितना आता है उतना आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और जितना अप्लाई करना आता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। सिर्फ बोल हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, मैं कर सकता हूँ नहीं, मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखा दिया। So that is the thing. And from the learner of Board Infinity, I'm requesting everyone from my side as alumni कि take advantage of weekdays. बोर्ड इन्फिनिटी मतलब वीकेंड, वो फॉर्मूला गलत है। बोर्ड इन्फिनिटी वीकेंड पे नो, they people work on weekend and take holidays on Monday if I'm not wrong. So you have to take holidays on Monday after getting दो दिन का बफर दो, एक मंडे को बफर दो, लेकिन ट्यूसडे टू फ्राइडे यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स। इफ यू आर नॉट क्लियरिंग योर डाउट्स देन नो वन कैन हेल्प यू। इवन बोर्ड इन्फिनिटी, आई विल नॉट हेजिटेट टू से दिस, बोर्ड इन्फिनिटी भी आपको मदद नहीं कर सकती इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग योरसेल्फ, क्योंकि स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता है। You have to do on your own. Thanks a lot, Gaurav, for joining us. I hope your story will inspire many of them to prepare smartly in their preparation and journey. Thanks a lot, buddy, and I wish you a great career ahead. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Have a good day. Bye. Yeah.